Hi, hello, namaskara. This is Megha and Suhas's channel. If you have watched our previous videos, you might already know that we traveled to Lucknow as part of Suhas's MBA course in IIM Lucknow. In this vlog, let's do some sightseeing of the capital city of Uttar Pradesh and also try some yummy and popular food across the city. Our buses are ready. We are ready to board them. Like his mom and Masi. Enjoy. हम लोग बात करें थोड़ी सी तो ये शहर जो है बहुत ही तहजीब तमीज़ अदाब नवाब कबाब शबाब का शहर कहलाता है। ठीक है, इसकी बात हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसके थोड़ा पीछे की हिस्ट्री से लेके चलते हैं इसको। जहां अभी खड़े हैं ये शहर के सबसे पुराने हिस्सों में से एक है। ये शहर जो नवाबों के लिए जाना जाता है, बहुत साल पहले लक्ष्मण जी ने इसको बसाया था, ऐसा लिटरेरी सोर्सेस हमें बताते हैं। उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अभी तक नहीं मिले हैं। मैं मास्टर्स किया मैंने आर्कियोलॉजी में और उसके बाद थोड़ा बहुत काम किया तो आई फाउंड सम ऑफ द एविडेंसेस जो बताते हैं कि ये शहर लगभग 2200 से 3000 साल पुराना शहर कहा जा सकता है। यहाँ से थोड़ा आगे चलिए तो गुप्ता और कुषाण पीरियड 5th सेंचुरी के आसपास तक आपको लोगों के होने के एविडेंस दिखते हैं। फिर उसके बाद में एक बड़ा सा गैप दिखता है 9th सेंचुरी तक और वहाँ से फिर से चालू होता है कि लोगों ने रहना यहाँ पे शुरू किया। यहाँ से फिर हम लोग सीधे 12th सेंचुरी में अगर जंप करें तो वहाँ से प्रॉपरली लखनऊ की हिस्ट्री या अवध की हिस्ट्री। तो जब तक मैं लखनऊ नहीं बोलूँगा तब तक मैं बात कर रहा हूँ अवध। ठीक है, अवध तो सब जानते ही होंगे, वो टेरिटरी जिसे इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने रूल किया, दैट इज कॉल्ड अवध। अब इक्ष्वाकु वंश के राजा कौन थे? रामचंद्र जी, दशरथ और उस पूरी सीरीज के या उस पूरे कुल के लोग जो थे ये इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। अब यहाँ से हम लोग चले तो 12th सेंचुरी में सल्तनत ने पूरा नॉर्थ इंडिया या दिल्ली रूल किया और यहाँ से जिस वजह से उन्हें दिल्ली सल्तनत कह रहे हैं। दिल्ली सल्तनत जो है दिल्ली से लगा करके फिर इस पूरे रेंज में है। लखनऊ भी उनके गवर्नर्स रूल किया करते थे और लखनऊ एक तरह से देखा जाए तो हर बार गवर्नर्स ने ही रूल किया, कभी किसी का डायरेक्ट रूल नहीं रहा। तो अवध गवर्नर्स रूल कर रहे हैं। रूल क्यों कर रहे हैं? अब एक चीज़ और बताऊँ मैं इसमें कि अवध जो था वो हमेशा रूल किया गया किसी ना किसी इन्वेडर के द्वारा। रीजन वॉज कि इट वॉज द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ इंडिया, तो एवरीवन वांट्स टू कैप्चर इट बिकॉज इट इज़ द लैंड विच कैन फीड द होल कंट्री। इसलिए सब ने इसको कैप्चर किया, चाहे वो एंशिएंट इंडिया से लेके आइए आप, गोंड कुषाण और फिर मुस्लिम्स और फिर ब्रिटिश। इमामबाड़ा, बड़ा देखिए पैलेस नहीं होते, इमामबाड़ा जो है ये मीटिंग हॉल्स होते हैं। ठीक है, फॉर द शिया मुस्लिम्स दे गैदर हियर फॉर द मीटिंग्स, मोन मीटिंग्स, कॉन्डोलेंस मीटिंग्स के लिए शिया मुस्लिम्स मुहर्रम के दिनों में इमामबाड़ा में इकट्ठा होते हैं। अब ये गेट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वहाँ से आपने इस गेट को देखा था जब पहले उतरते ही आप लोगों ने फोटो वगैरह खींची है। खासियत ये है कि इट इज द टॉलेस्ट गेट इन लखनऊ। That is Persian architecture and this one is Indian architecture which is called पंचमहला। अब बालकनीज के फ्लोर्स अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 टॉप तक आपको 5 फ्लोर्स दिखेंगे या झरोखे जो है ये 5 फ्लोर्स में दिखेंगे एंड दैट इज द राजपूताना आर्किटेक्चर पंचमहला। ओके, अब चलें अंदर, चलिए अंदर। After a brief introduction about the historical city of Lucknow, we first visited the Bada Imambara, which greeted us with a symphony of construction styles and architectures. The central hall is a proof of ingenious engineering, which boasts the largest arch roof in the world without any wood or metal support. Its colossal size allowed for gatherings of thousands during Muharram, the first month of Islamic calendar. Exploration of the Bada Imambara is incomplete without venturing into the legendary Bhool Bhulaiya, literally translating to House of Confusion. This labyrinth, a playground for Nawabs and a source of endless fascination for the visitors, it's said to have 1024 pathways. Legend whispers of secret escape routes for the Nawabs and hidden treasures within the maze's depths, adding it to the mystique. Beware of this Bhool Bhulaiya because you'll most definitely get lost if you go in there without a local guide.
आराम से, एक छोटा है एक बड़ा है, आराम से। अगर आप ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ್ಯಾ? ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ್ಯಾ? आप लखनऊ में। Hi guys, what's up? Sagar, are you excited? How was Very excited. The next mission is Tunde Kebab. next I'm super Maqsad? excited for Tunde Kebab. Next Maqsad is Tunde Kebab. So our next stop after the Bara Imambara was a famous kebab shop in Lucknow called the Tunde Kebabi, which dates back to the 17th century. The kebabs were created by Haji Murad Ali, a one-armed chef who won a royal contest to make soft kebabs for a toothless Nawab. The kebabs became so popular that they are now known as Tunde Kebabi, which literally means one-armed man's kebabs. Kebab. It's basically called Tunde Kebab because the guy who invented this had only one arm. So they used to call him Tunde and he used to make it like this. So the speciality here is this galati kebab, the mutton biryani. This is an Awadhi mutton biryani and this is chicken seekh kebab. I've heard this just melts in your mouth. Sure does. 100%. There are some vegetarians in the house and we're waiting for veg kebab. For veg kebab. This place was definitely a heaven for the non-vegetarians with various meat options. It had very limited options for the vegetarians though. Honest review दे दो. डिप्लोमेटिक रिव्यू नहीं चाहिए. Turn off the camera. Yeah, camera is off. ठीक है। We are at Prakash Kulfi. It's a very popular kulfi place in the center of Lucknow. Do you like it? Suhas, what about you? Let me taste it. So, I taste a lot of kesar, but there's some powdery texture. I don't know what it is. I'm trying to figure it out. The kulfi itself is powdery. It's not like malai. Yeah, it's not what my palate is used to. So let me see. Let me have a few more bites. Yeah, I'm not a big fan of this. The Prakash Kulfi place had mixed reviews from our friends group, but Suhas and I honestly were not that impressed by it. We have had better kulfis at other places. This is to be the popular Royal Cafe. It's known for its basket chat. It's really hungry, all the vegetarians, so we are here to eat a lot of vegetarian food. नहीं एक दही वाला एक नॉन दही वाला. Hey, basket chat. From Royal Cafe. Yeah. वो क्या है? Saith is gonna taste it now. Okay. So in this you will find a dahi vada, then you will find its special chutney, which you can't see it here, but you can see it here. This is very famous for its chutney. Then in this, what you will find now is aloo tikki, some papadis, some curd. So here you see a big aloo tikki here. Nice. So it's basically a mix of everything here. Nice. Now you have to just take it and eat it with this. Eat this like ये इधर से ये आलू की पपड़ी है और ये टिकिया है तो eat it. How is the chutney? The famous chutney? It is good. Okay. Famous chutney, I'm not tasting it. Yeah. That one. Amazing gulab jamun and rabdi. Oh. So yummy. No, only we tried the gajar halwa. But we'll come again maybe. Somebody was having really nice stick kulfi. Suhas and his love for kulfi. This is the kind of rocket kulfi I was looking for. Hello. Hi, Megha. How is the chat? The chart is awesome. It is good. Kulfi, हाँ ये famous. Hello. चलो. Today we are at
Chakla Chaat House in 1968. It is in Hazratganj, and we have ordered aloo tikki chaat, and it's really yum. We already had some, and now Suhas is gonna have it once again. So this is the one without dahi. That is the one with dahi. It looks really yum. Lots of fresh coriander and some. I see imli ka chutney and I see pudina chutney. Let's see how it tastes. It is really yum. It's like very traditional. No extra stuff. Just straightforward tikki, like how it's supposed to be. How I had while growing up. It hits the spot. Now Gayatri will give review of the dahi one. Already full, but I still try to have some. So the dahi and the chutney blends very well. And the aloo tikki is, like Suhas said, is very simple. And it's soothing to the tongue when you have it. Super tasty. And no extra flavors. Simple but tasty and delicious. Nice. This is a place called Hazratganj. It's like the center of Lucknow city, almost. A lot of places to shop and a lot of activity going on. After a long day of roaming around the city and eating lots of food, we ended the evening by having some chai and by doing a lot of shopping of the traditional chikankari style of clothing of Lucknow. Hope you enjoyed this video. Thank you.